गांव के चौक में युवा रिया इधर उधर उछलती है। उसकी हंसमुख बातें हवा में गूंजती हैं। वह ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एक विशाल खरगोश की उसकी कहानियों को केवल संदेह ही मिलता है। रिया गांव से परे निकलती है, जहां एक अकेला भेड़िया शांति भंग कर देता है। घबराहट से जकड़ी हुई रिया गांव की ओर दौड़ती है। उसकी निराशा भरी चीखें गूंजती हैं। गांव वाले अतीत के धोखों से तंग आकर उसकी बेतहाशा चीखों पर बहरे कान कर लेते हैं। रात के अंधेरे में एक भेड़िया गांव में घुस जाता है, निर्दोष जानवरों पर कहर बरपाता है। डरे हुए ग्रामीण हताशा में चिल्लाते हैं, रिया, हमारी मदद करो। रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मुझे पता है यह मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। रिया ग्रामीणों के बीच भेड़िए को फंसाने की रणनीति को अंतिम रूप देती है। सावधानी पूर्वक ग्रामीण धोखे से एक जाल बनाते हैं, जिसे पत्तियों से ढक देते हैं। भेड़िए चारा से लुभाकर अनजाने में जाल पर कदम रख देते हैं। जैसे ही भेड़िया कैद में छटपटाता है, ग्रामीण विजयी होकर खुशी से चिल्ला उठते हैं। रिया गांव वालों के सामने खड़ी है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही है, क्योंकि वह हार्दिक ईमानदारी से बोलती है, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है और मैं अब से हमेशा सच बोलूंगी। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण को दर्शाते हैं, क्योंकि पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा फुसफुसाती है। गांव वाले क्षमा के साथ जवाब देते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं रिया, और तुम्हारा वापस स्वागत करते हैं। रिया को राहत की एक स्पष्ट लहर महसूस होती है, क्योंकि उसे ईमानदारी के गहरे महत्व का एहसास होता है। There once was a squirrel named Nibbles who lived in a big oak tree in the middle of a lush forest. Nibbles was clever, but he was also very mischievous and loved playing pranks on his fellow forest creatures. One sunny day, Nibbles came up with a particularly cheeky idea. He painted acorns bright colors and left them scattered all around the forest floor. As his friends gathered their acorns, they were puzzled by the sight of what appeared to be the new cosmic colors in their typical brown bounty. Mrs. Hedgehog scratched her head as she looked at her vibrant pink acorn. Meanwhile, Mr. Rabbit was squinting into the holes he dug as they glowed like little lanterns thanks to the neon yellow acorns inside. As they puzzled over this odd occurrence, Nibbles hid behind a bush, quietly chuckling to himself. However, laughter soon turned into concern as Nibbles noticed Mr. Owl struggling to carry his usual number of acorns. With the acorns painted, they had become slippery, and Mr. Owl kept dropping them as he attempted to fly back to his nest. Nibbles realized that his prank had backfired. Instead of being funny, it had caused trouble for his friends. Feeling guilty, Nibbles dashed out of his hiding place and gathered up all the bright acorns. I'm sorry, everyone, Nibbles squeaked. I thought it would be funny, but my prank didn't help any of you. Mr. Owl, balancing on a branch, nodded wisely. While laughter is good, it is better when shared by all without causing trouble. The forest creatures forgave Nibbles, and with everyone's help, they managed to scrape off the paint from the acorns. That day, Nibbles learned a valuable lesson. True joy comes from being kind and thoughtful. From then on, Nibbles used his cleverness to help and entertain his friends, rather than playing pranks that could go awry. His friends appreciated his effort, and Nibbles felt much happier being a part of the community. And while Nibbles still remained the most cheeky squirrel in the forest, he became known for his heart more than his mischievousness. एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चिरपी। वह बहुत मीठा गाती थी और सबकी मदद करती थी। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मोको। मोको बहुत स्वार्थी था, वह हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ों पर फल नहीं थे। सभी जानवरों को पानी और खाने की तलाश थी। चिरपी ने एक चट्टान के पास थोड़ा सा पानी देखा। वह वहां से थोड़ा सा पीकर संतुष्ट हो गई। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों, एक प्यासे खरगोश, थके हुए हिरन और कमजोर गिलहरी को देखा तो उसे दुख हुआ। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, उसने सोचा। वह जंगल में उड़ती गई और एक छुपे हुए झरने को खोज निकाला। खुशी खुशी वह वापस आई और सभी जानवरों को झरने के बारे में बताया। एक एक करके सभी वहां पहुंचे और पानी पीकर खुश हुए। लेकिन जब मोको को झरने के बारे में पता चला तो वह लालची हो गया। वह सबको धक्का देकर आगे बढ़ा और इतना पानी पिया कि झरना गंदा हो गया।
फिर उसने एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर झरने को बंद कर दिया। सभी जानवर हैरान रह गए। मोको, तुमने ऐसा क्यों किया? खरगोश ने रोते हुए पूछा। मोको हंसा, अब यह पानी सिर्फ मेरा है। चिरपी छोटी थी लेकिन समझदार थी। उसने सभी पक्षियों, कठफोड़वा, तोता और कौआ को इकट्ठा किया। हमें मोको को सबक सिखाना होगा, उसने कहा। कठफोड़वे ने पत्थर पर चोंच मारी, कौए ने कीचड़ खींचा और तोते ने मोको को जोर जोर से चिल्लाकर परेशान किया। जल्दी ही झरना फिर से खुल गया। सभी जानवर खुश होकर पानी पीने लगे। मोको को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी और बुरा था। चिरपी मुस्कुराई, अपनी गलती मान लेना ही बहादुरी है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। उस दिन के बाद मोको ने कभी लालच नहीं किया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, लालच करने से इंसान अकेला पड़ जाता है, लेकिन दयालुता दोस्तियां बनाती है। हमेशा दूसरों की मदद करो और बांटकर खाओ। महल के प्रांगण में दीप्तिमान राजा विक्रम अपने दरबारियों के बीच खड़े हैं, जो गर्म धूप में नहाए हुए हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और प्रशंसा का आदेश देती है। विक्रम बोलना शुरू करते हैं। उनके न्यायपूर्ण शब्द लोगों को उत्साह और विश्वास से भर देते हैं। अचानक एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, जो आनंदमय सभा पर एक छाया डालता है। विक्रम के शाप का शिकार होने से अंधेरा छा जाता है, जिससे राज्य निराशा में डूब जाता है। विक्रम, along with his most trusted advisor, is studying ancient texts to learn about the curse. उन्हें एक ऐसी भविष्यवाणी मिलती है जो श्राप तोड़ने का एकमात्र तरीका बताती है। विक्रम को 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा और एक पवित्र वस्तु प्राप्त करनी होगी। विक्रम तत्वों से लड़ता है। उसकी यात्रा उसे विश्वासघाती पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक गरजते हुए बरानी तूफान के बीच विकृत राक्षस घात लगाए बैठे हैं, जो विक्रम के मार्ग को चुनौती दे रहे हैं। विक्रम अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग करते हुए पहाड़ की चुनौतियों के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। विक्रम अपने भाग्य का सामना करने के लिए प्राचीन मंदिर में प्रवेश करता है। वह अपनी तलवार निकालता है। भयावह जादूगर के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी करता है। विक्रम एक भयंकर संघर्ष के बाद जादूगर को हरा देता है और पवित्र कलाकृति का दावा करता है। विक्रम महल के प्रांगण में लौटता है। उसके हाथ में पवित्र वस्तु चमक रही है। वह वस्तु को ऊपर उठाता है। अभिशाप चकनाचूर हो जाता है और प्रकाश राज्य में भर जाता है। विक्रम का स्वागत करते हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। कथन, विक्रम को एक महान नायक, अपने राज्य के रक्षक के रूप में सराहा जाता है। Sunlight bathes Anya's studio as she stands before her easel, vibrant strokes bringing her canvas to life. Lost in her sanctuary, Anya hums softly, her heart finding rhythm with every brushstroke. Sketches and paintings on the walls reflect her boundless creativity. In the hushed art gallery, Anya presents her portfolio to Mr. Stern, her nervousness palpable. Mr. Stern flips through the pages, his expression a mask, while Anya's confidence crumbles. Mr. Stern's words cut through the silence. Technically proficient, but lacking originality. You have potential, but you need to find your own voice. Anya sits motionless among a sea of crumpled sketches. Her once vibrant studio now a desolate landscape of shadows and creative stagnation. The blank canvas looms before her, a stark reminder of the inspiration that has vanished, leaving her paralyzed by self-doubt. Consumed by frustration, Anya crumples another sketch, casting it aside into a waste paper basket, already overflowing with shattered dreams. A fleeting memory of her grandmother's unwavering belief pierces through the darkness, a faint echo of hope in the suffocating silence of her studio. Anya stands beside her artwork, her presence radiating confidence and triumph. Mr. Stern approaches, his eyes reflecting surprise. I was wrong about you, Mr. Stern admits. You have not only found your voice, but you have also learned how to use it. Your art is a true expression of your soul. Anya smiles, her eyes shining with pride and gratitude. In the vast capital city of King's Landing, the Red Keep stood watching over the realm. Inside its imposing walls, the air buzzed with news of an impending succession. Old King Jaehaerys Targaryen, having reigned peacefully, had decreed that a great council be convened to decide the next ruler, for he had no direct heirs left. As the council was set to begin, many noble houses of Westeros arrived with their claims and aspirations. Of particular interest were Princess Rhaenys Targaryen, known as the Queen Who Never Was, and her cousin Viserys. Rhaenys, daughter of Prince Aemon, had been passed over once for the throne due to her gender, while Viserys, her cousin, was a more traditional, yet less popular choice.
The spacious hall echoed as lords and ladies whispered and argued their support. The tension was palpable. Each faction had secret agreements and hidden grudges. The aged Maester Orwyle read aloud the claims, his voice rising over the murmurs. Meanwhile, in the shadowed corners of the keep, Daemon Targaryen, Viserys' ambitious brother, plotted quietly. Known for his unpredictability and martial prowess, Daemon was determined to secure his own future by any means necessary. Alongside him was his ally, Ser Harwin Strong, the towering knight with an inscrutable loyalty to House Targaryen. Dragons soared in the skies above, a reminder of the power and legacy of the Targaryen bloodline. The largest and most fearsome among them was Caraxes, Daemon's own dragon, whose presence lent an air of intimidation. As the council progressed, Viserys' calm demeanor and promises of stability seemed to sway most of the undecided lords. His quiet strength contrasted sharply with Daemon's fiery ambition, drawing both admiration and suspicion. Finally, after much debate, the Great Council chose Viserys Targaryen as king. Celebrations were tempered by the knowledge that the decision may not sit well with all, especially with Daemon, who watched from the periphery, his expression unreadable. Thus, Westeros stood on the precipice of change, as old alliances trembled and new rivalries began to smolder. Beneath the sprawling oak, Barnaby Buttercup sits alone, as autumn leaves swirl around him, accentuating his solitude. Laughter echoes across the village green as Tom, Lizzie, and Sam taunt him. Barnaby Butterball, Fat Barney. Barnaby halts, a faint whimper carried on the wind, drawing him towards a dense, thorny bush. He carefully parts the thorny branches, revealing a small, brown bird trapped within. With delicate precision, Barnaby frees the bird's tangled wings, enduring the sting of the thorns. The bird chirps its gratitude, then ascends into the sky, leaving Barnaby with a quiet sense of fulfillment. A terrible storm descends upon Willow Creek, the river swelling menacingly, threatening Old Man Fitzwilliam's cottage. Villagers watch, paralyzed by the storm's fury. Barnaby, fueled by courage, grabs a sturdy rope from Nana Willow's bakery. He waddles towards the raging river, determined to rescue Old Man Fitzwilliam. Barnaby, a titan of strength, confronts the furious river, his grip unyielding against the torrent's violent assault. On the riverbank, the villagers watch, their faces etched with a fragile hope, their silence amplifying Nana Willow's desperate plea. Barnaby, be careful. Unyielding, Barnaby remains laser-focused, his resolve solid as the river rages around him. Barnaby, drenched and exhausted, struggles to pull Old Man Fitzwilliam from the river towards the riverbank. The villagers erupt in cheers as Barnaby and Old Man Fitzwilliam stumble onto the safety of the riverbank. Wrapped in warm blankets, Barnaby is overwhelmed by a profound sense of pride. चमकते सूरज के नीचे रामू अपने हल को जीवंत खेत में चलाता है। पक्षियों के गाने की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। सीता प्रकट होती हैं, भोजन लेकर जो न केवल उनके शरीर को पोषण देता है, बल्कि उनके साझा सपनों को भी पोषण देता है। कंधे से कंधा मिलाकर रामू और सीता भोजन साझा करते हैं। उनके दिल भविष्य के वादे की आशापूर्ण प्रत्याशा में एकजुट हैं। महीनों बाद अथक धूप में खेत झुलस गया है। दरारें सूखी धरती को कुरूप कर रही हैं। रामू की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। निराशा में रामू स्वर्ग की ओर देखता है, दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता है। सीता की आवाज निराशा के बीच आशा की एक किरण प्रदान करती है। हम इस कठिनाई का सामना मिलकर करेंगे। किसान के साधारण घर के अंदर रामू और सीता के चेहरे बढ़ती कर्जों से छायांकित चिंता को दर्शाते हैं। रामू अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने पर विचार करता है। फैसले के बोझ से उसका हाथ कांप रहा है। यह भूमि हमारे पूर्वजों का प्रतीक है, हम इसे नहीं बेचेंगे। सीता दृढ़ता से उसे रोकती है। उसकी आवाज अटूट संकल्प से भरी हुई है। विपरीत परिस्थितियों में उनकी आत्माएं एकजुट होती हैं। तेल के दीपक की मंद रोशनी उनके साझा दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। रामू हलचल भरे बाजार में पहुंचता है। उसकी गाड़ी ताजी काटी गई फसलों से भरी हुई है। फिर भी निराशा की एक लहर उस पर छा जाती है। बाजार चतुर व्यापारियों से भरा है, जिनकी अवसरवादी आंखें रामू की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने पर टिकी हैं। निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद रामू के भीतर दृढ़ संकल्प की एक आग जलती है, क्योंकि वह उचित मूल्य के लिए लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। बारिश खेत को एक जीवंत हरे भरे विस्तार में बदल देती है। रामू और सीता खुशी से झूम उठते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर वे भूमि की खेती करते हैं। रामू का समर्पण उसके परिवार की भलाई सुनिश्चित करता है। Once upon a time, in a far-off galaxy, there was a curious little planet named Zog.
It wasn't like Earth, with blue seas and green forests. No, Zog had shimmering silver deserts sprinkled with diamond dust and glistening crystal trees. The inhabitants, the Zogians, were inventive creatures with a great passion for exploring the wonders of their world. Among the Zogians was a brilliant young scientist named Lumio. Lumio was renowned for his extraordinary inventions, which the entire planet admired. His inventions were not only clever, but seemed almost magical because they were far advanced beyond what anyone had imagined. Lumio's latest creation was a wondrous device he named the Dream Machine. The Dream Machine, when activated, could transform the wildest imaginations into reality. Zogians could dream of flying, and the machine would give them wings. They could imagine dining under the stars, and suddenly, a luxurious dinner would appear before them. But one thing puzzled Lumio. How did this machine work? It seemed to break all the known laws of physics. Lumio decided to find out the truth behind the magical workings of the Dream Machine. He embarked on a mission to understand the core of his creation, diving deep into research and experiments. He spent days reading every ancient manuscript about energy and matter transformation. He spoke to the wisest Zogian elders about the mysterious forces that govern the universe. After much hard work, Lumio discovered a new element called Fantastium, hidden beneath the diamond dust of the Silver Desert. Fantastium had remarkable properties, much like magic. Fantastium could bend and twist reality itself. Lumio realized that the Dream Machine was powered by Fantastium, explaining its ability to bring dreams to life. The discovery delighted him and the Zogians, who celebrated Lumio's greatness with festivities under the shimmering stars. But Lumio had learned something even more important, that sometimes the boundaries between science and magic, reality and dreams, are thinner than Zogians ever thought. Lumio vowed to protect Fantastium and use the Dream Machine wisely. With every spark of Fantastium, Zog soared on wings of imagination, understanding that dreams, fueled by science, were the treasure of their unique world. And so, Lumio's tale of curiosity and discovery lived on, inspiring Zogians and otherworldly creatures everywhere to embrace wonder, learn, and dream beyond their stars. A tiny mouse scurries through a field of towering grass, its world a maze of shadows and sunlight. Sunlight streams through the leaves, casting dancing shadows that play around the tiny creature. The mouse pauses, its whiskers twitching, sensing danger in the vast, overwhelming world. In the silent darkness, a small mouse seeks refuge, its tiny form huddled among soft bedding. The mouse remains vigilant, listening intently for any disturbance. The quiet is shattered by the gentle rustling of the wind. The tiny mouse enters a massive barn, a labyrinth of hay and hidden dangers. The mouse navigates through the barn, weaving between enormous hay bales and avoiding the notice of larger animals. The scent of hay and food fills the air, but a cat's shadow looms, unnoticed.